Hello everyone, welcome back to my class. So today we are going to discuss some important MCQs related to simple harmonic motion and ये MCQs जो है वो 10th क्लास के लिए हैं बट इसमें आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं. हम इसमें से सब MCQs नहीं करेंगे, जस्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो द फर्स्ट MCQs दैट वी हैव इज़ another term for the vibration is called. सो वाइब्रेशन के लिए जो दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं वो क्या है? ऑसिलेशंस. सो ऑसिलेशन मीन्स वाइब्रेशन. एंड नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन. सो हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड मीडियम इन विच वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. सो ये जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे. सो राइट आंसर इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. So next MCQs that we have on the next page, the motion of a pendulum is an example of what? यानी कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. सो हमारे पास है पेंडुलम की मोशन जो है हमारे पास क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर या फिर रोटेटरी. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द राइट ऑप्शन. And next we have simple harmonic motion is a rectilinear motion, vibratory motion. So right answer is vibratory motion. And next we have the distance between the mean position and the extreme position is called as displacement, equilibrium, maximum distance or amplitude. So right answer is amplitude. So next we have force applied on a body attached with a spring is directly proportional to the displacement. As we know that according to Hooke's law, F directly proportional to a displacement. So right answer is displacement. And next, the 10th one, we have the SI unit of spring constant is Newton per meter. As you know that according to Hooke's law, F is equal to kx. सो इट मीन्स दैट अगर आप यहाँ से आप के की वैल्यू निकालें दैट विल बी के इज़ इक्वल टू एफ ओवर एक्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. न्यूटन पर मीटर इज द SI unit for spring constant. So next we have another MCQs. Mathematical form of Hooke's law is given as F is equal to kx, F is equal to minus kx or x is equal to kf and x is equal to minus kf. So right answer will be F is equal to kx. According to Hooke's law, F is equal to kx. So next we have when a spring is attached and then released, it moves towards the mean position due to. So हमारे पास इसका right answer है that is restoring force, because restoring force की वजह से है जो body है जो है वो दोबारा अपनी mean position की तरफ आती है. And next we have the mathematical expression for the restoring force is given F is equal to minus kx. minus क्यों? Because it always directly towards the mean position. So that's why यहाँ पे हम जो minus sign जो है वो use कर रहे हैं. So right option is D. And next we have the direction of the restoring force and the external force is always opposite to each other. बिकॉज जब एक बॉडी को आप मीन से एक्सट्रीम पे लेके जाते हो तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है, इसलिए ऑपोजिट होंगे. एंड नेक्स्ट वी हैव व्हेन द मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज एट इट्स मीन पोजीशन इट्स एक्सेलेरेशन. सो मीन पोजीशन पे हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है इज ऑलवेज ज़ीरो मिनिमम. And next we have when the mass attached to spring is at its mean position its speed is. और mean position पे जो हमारे पास speed होगी that will be maximum. ठीक है, acceleration जो है that will be minimum means zero and speed will be maximum. And the next we have when the bob of a pendulum is released from its extreme position it does stop at the mean position due to. So as ड्यू टू, तो बॉडी जो है वो क्यों नहीं रुकती है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया जो है वो बॉडी को जो है वो उसी मोशन में रखती है. सो नेक्स्ट वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय. सो एज वी नो दैट दिस फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. एंड नेक्स्ट वी हैव टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नाउन एज डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, टोटल टाइम और नन ऑफ दिस. सो राइट ऑप्शन इज टाइम पीरियड. So next we have the product of frequency and time period is equal to. So as we know that frequency जो है वो time period का reciprocal है. So F is equal to 1 over T. So यहाँ से अगर हम इसका unit देखें so that will be इनका जो product है frequency और time period का वो क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा. So that's why the product of frequency and time period is equal to 1. So right answer is 1. So we have the next question is
इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ इट्स टाइम पीरियड टी विल बिकम। अगर हम इसी फॉर्मूले में टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इस फॉर्मूले में लेंथ को हम हाफ कर दें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसमें क्या चेंज आएगा। सो यहाँ पे आप लेंथ को एल बाई टू लिखेंगे। सो हमारे पास जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा टू बाई एल ओवर टू जी। सो हमारे पास टू पाई एल ओवर जी जो है हम उसको सेपरेट करेंगे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बनेगा टी इज इक्वल टू न्यू टाइम पीरियड जो है वो आएगा वो टी बाई अंडर रूट टू आएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये बन रहा है यहाँ पे बी। सो टी बाई अंडर रूट टू। Okay, so next we have the distance between two neighboring crust and trough is equal to. So lambda is the right answer. So next we have another MCQs. The oscillation of a system in the presence of some resistive force is called what? So the right option is damped oscillation. कोई भी oscillation जो है वो किसी resistive force की presence में हो वो damped oscillation होती है. So next we have such waves which need material medium for their propagation are called mechanical waves like sound waves. And next we have waves produced in a stretched ring is an example of. So right answer is transverse wave because इसमें जो मोशन जो है वो परपेंडिकुलर होती है इस तरह क्रस्ट एंड ट्रफ इसमें जो वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन. सो नेक्स्ट वी हैव रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, हीट, लाइट वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ. So these all are the examples of electromagnetic waves. And next we have the waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the waves are called transverse wave. जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल जब इसमें पढ़ी. So next we have the unit of frequency is. So frequency का जो unit है वो है हमारे पास hertz. And next we have another MCQs. In the expression v is equal to f lambda which quantity depends upon the properties of the medium. So इनमें जो है वो प्रॉपर्टी पे कौन सी डिपेंड करती हैं v स्पीड एंड वेवलेंथ मीन्स v एंड लैम्डा जो है वो डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे और कौन सी वैल्यू डिपेंड नहीं कौन सी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. And next we have the refraction of waves occur due to the change in their. So refraction जो है वो किस वजह से होती है क्यों करती है because ऑफ स्पीड. सो स्पीड रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्पीड चेंज होती है. द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स बिकॉज स्पीड चेंज होती है इसलिए रिफ्रैक्शन होती है. द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर. डेप्थ ऑफ वाटर में जो है वो स्पीड चेंज होती है. द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज़ रिड्यूस्ड व्हेन इट एंटर्स इन. सो कब जो है वो हमारे पास स्पीड जो है वो रिड्यूस होती है जब हमारे पास जो है वो एंटर करती है शैलर वाटर में राइट और इसी में इंक्रीज़ कब करती है स्पीड जब वो डीप वाटर में एंटर करती है. ठीक है. सो ये आपने याद रखना इसमें ये कॉन्सेप्ट कि इंक्रीज़ कब करती है और डिक्रीज़ कर स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कब करती है. एंड द लास्ट MCQs दैट वी हैव बर्निंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर और ऑब्स्टेकल इज़ कॉल्ड. सो राइट आंसर इज़ डिफ्रैक्शन. सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपको बोर्ड लेवल में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो आपको हेल्प करेंगे. सो होप सो you like this video and for such more videos don't forget to like this video and subscribe this channel.